We were solving grid machines yesterday in the last class. Right. So this is the QR code of my compiler design book. This will be helpful for GATE, BTech and MTech. If you have not taken it, please take it. Okay. And this is my Telegram channel. If you have not joined Telegram channel yet, please join the Telegram channel. Please join the Telegram channel and write your answers in the Telegram channel. Okay. Okay. Now, so we are looking at regular languages. Yesterday, we were looking at regular languages. Today also, we will be looking at regular languages. Okay. Okay. So answer this question. So answer this question. Answer this question. What is the language accepted? What is the language accepted? Answer it in the Telegram channel. Okay. Open the Telegram channel. Open the Telegram channel and answer it in the Telegram channel. Okay.
minimum 2 A's and 2 B's. Very good, Soumyadeep. Darshan, Omkar. You are saying at least 2 A's and 2 B's. You are saying at least 2 A's and 2 B's. So, how are you going to do this? Now the final state is here. So draw the lines in such a way that final state will be ऐसा lines draw करना जैसे final state intersection में आएगा. ठीक है, तो एक लाइन इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लाइन इधर ड्रॉ करना पड़ेगा. तो ये लाइन में क्या हो रहा है? 20 तो कुछ भी है, 0 है, 1 है, 2 है, 20 तो कुछ भी है, लेकिन येस तो एटलीस्ट 2 है, 1 2 एंड देन एनी नंबर ऑफ एस, राइट? येस तो एटलीस्ट 2 है, तो आप क्या बोल सकते हैं? एटलीस्ट 2 येस. और हॉरिजॉन्टल लाइन लिखना. ठीक है, और इसमें येस तो कुछ भी है, 0 है, 1 है, 2 है, येस तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जरूर ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बीस तो एटलीस्ट 2 है ना? 2 एंड मोर देन 2, 2 एंड मोर देन 2, तो हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 2 बीस, एटलीस्ट 2 बीस, है ना? तो आंसर क्या है? एटलीस्ट 2 येस एंड एटलीस्ट 2 बीस. At least 2 A's and at least 2 B's. At least 2 A's and at least 2 B's. है ना? इसका बोलना ये फाइनल स्टेट है. टेलीग्राम चैनल पे आंसर करना. टेलीग्राम चैनल पे आंसर करना.
So what is this? Exactly 2A's and exactly 2B's, है ना? So you are going to draw a line here. आपको दो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, बस एक ही फाइनल स्टेट है. एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, बस. तो ये लाइन में देखेंगे तो एग्जैक्टली 2B's है ना? ये लाइन में देखेंगे तो एग्जैक्टली 2A's एग्जैक्टली 2A's है ना? और ये लाइन में देखेंगे तो एग्जैक्टली 2B's एग्जैक्टली 2B's एग्जैक्टली 2A's and exactly 2B's exactly 2A's and exactly 2B's, है ना? तो आंसर क्या है? exactly 2A's and exactly 2B's exactly 2A's and exactly 2B's. ठीक है, इसका आंसर करना. इसका आंसर करना. एवरीवन, सब लोग आंसर करना. सब लोग आंसर करना. सब लोग करना. सब लोग ट्राई करना.
एटलीस्ट 2 A's एट मोस्ट 3 B's। सब लोग करो। तो इसका फाइनल स्टेट्स ये सब है, 4 फाइनल स्टेट्स है। तो आपको ये 4 फाइनल स्टेट्स को कवर करना है, मतलब ऐसा एक लाइन लिखना पड़ेगा। ये लाइन में क्या हो रहा है, ये लाइन में एटलीस्ट 2 A's हो रहा है ना। बी तो कुछ भी हो रहा है, बी तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बी तो कुछ भी हो रहा है, लेकिन येस तो एटलीस्ट 2 आ रहा है ना। एटलीस्ट 2 A's आ रहा है, एटलीस्ट 2 A's आ रहा है ना। और ए लाइन में देखना 0 B's है, और ए लाइन में देखना 1 B है, और ए लाइन में देखना 2 B's है, और ए लाइन में देखना 3 B's है ना। तो क्या बोल सकते हो, एटलीस्ट 2 A's एंड एट मोस्ट 3 B's। एटलीस्ट 2 A's एंड at most 3 B's। at least 2 A's and at most 3 B's, है ना। ठीक है, तो अभी अलग क्वेश्चन का, अलग तरह का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू 0 कामा 1, सिग्मा इक्वल टू 0 कामा 1, L इक्वल टू all binary numbers divisible by 4, all binary numbers divisible by 4, all binary numbers divisible by 4। कैसे करते हो ये, कैसे कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। all binary numbers divisible by 4। कुछ हिंट देना। चार्जेस, तो अगर एक नंबर को 4 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर्स आएगा, और आप वो मेथड में भी कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए वो मिनिमम आंसर नहीं देगा, मिनिमल आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सुनना, जब भी हम कुछ बाइनरी नंबर को 2 पावर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इधर 2 पावर 2 से डिवाइड कर रहा है ना, 4 मतलब 2 पावर 2। बाइनरी नंबर को 2 पावर 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर लास्ट 2 बिट्स 0 है तो वो डिविजिबल बाय 2 पावर 2 है। अगर लास्ट 2 बिट्स 0 है तो वो डिविजिबल बाय 2 पावर 2 है। अगर मैं बोलूं कि बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 8 मतलब 2 पावर 3, अगर लास्ट 3 डिजिट 0 है तो वो डिविजिबल बाय 2 पावर 3 है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि टर्नरी नंबर मतलब 0 1 2 टर्नरी नंबर इज डिविजिबल बाय 9 मतलब 3 पावर 2 है, तो लास्ट 2 बिट 0 होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूं कि
decimal number base 10 number divisible by 100 which means 10 square, मतलब लास्ट 2 बिट 0 होना चाहिए। तो इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? एंडिंग विद 0 0। ठीक है, आप फाइनाइट ऑटोमेटा को ड्रॉ करना और टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करना। फाइनाइट ऑटोमेटा को ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना। एंडिंग विद 0 0 है ना, सौम्यदीप ओमकार एंडिंग विद 0 0 है ना। आप DFA NFA रेगुलर एक्सप्रेशन देना और टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना। टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना। ठीक है, DFA NFA रेगुलर एक्सप्रेशन देना और पिक्चर लेके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना। DFA NFA और रेगुलर एक्सप्रेशन को ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना। ठीक है, अगर डिविजिबल बाय 5 होता तो हम करेंगे वो मॉडल। ठीक है, चार्जेस हम वो मॉडल करेंगे। ठीक है, DFA NFA और रेगुलर एक्सप्रेशन को ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करना। कोई नहीं किया है?
ठीक है, तो पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। एंडिंग विथ 2 zeros है ना, तो 1 + 0 स्टार फॉलोड बाय 0 0, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है ना। तो एनएफए कैसे होगा, स्टार्टिंग में कितने भी 0 1s आ सकते हैं, उसके बाद अगर 2 zeros आया तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, ये है मिनिमल एनएफए, ये है मिनिमल एनएफए। तो मिनिमल डीएफए क्या होगा, तो एंडिंग विथ 0 0 है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, लास्ट में 2 zeros आया तो। ठीक है, जितने भी वंस है मैं वेट करूंगा 0 0 के लिए, मैं वेट करूंगा 0 0 के लिए। अगर इधर 1 आया तो फिर से 0 0 के लिए वेट करूंगा, अगर इधर 1 आया तो फिर से 0 0 के लिए वेट करूंगा। ठीक है, ये है एंडिंग विथ 0 0, ये मिनिमल डीएफए है। बोथ मिनिमल डीएफए एंड मिनिमल एनएफए, एवरी डीएफए इज एनएफए, तो ये एनएफए भी हो सकता है। ठीक है, ये मिनिमल डीएफए एंड मिनिमल एनएफए, ये मिनिमल एनएफए है क्योंकि 0 पे ये स्टेट 2 स्टेट्स पे जा रहा है, तो डीएफए नहीं हो सकता है, ये मिनिमल एनएफए है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि सिग्मा इक्वल टू 0 1 2 लैंग्वेज इक्वल टू ऑल ternary numbers, which means base 3 numbers, or ternary numbers divisible by 9, all ternary numbers divisible by 9, तो क्या होगा। जनार्दन वेरी गुड। मानव डेड स्टेट नहीं आएगा ये क्वेश्चन में, एंडिंग वाला क्वेश्चन में, और दर्शन वही है, डेड स्टेट नहीं आएगा। मानव डेड स्टेट नहीं आएगा। ठीक है, सब लोग टेलीग्राम में आंसर करना, आपका आंसर टेलीग्राम में लिख के टेलीग्राम में डाल देना। टर्नरी नंबर्स डिविजिबल बाय 9, इसके मतलब क्या हो सकता है, इसके मतलब क्या हो सकता है। टर्नरी नंबर्स डिविजिबल बाय 9, तो इसके मतलब क्या होगा, एंडिंग विद 0 0 होगा, है ना। बेस 3 नंबर डिविजिबल बाय 9 मतलब एंडिंग विद 0 0 होगा। ठीक है निशु, 3 स्टेट्स तो ठीक है, लेकिन आपका एनएफए डीएफए को ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। ठीक है, मुझे आपका एनएफए डीएफए देखना है। 3 स्टेट्स तो ठीक है। वेरी गुड ओम प्रकाश, वेरी गुड ओम प्रकाश। सिर्फ ओम प्रकाश ने दिया है आंसर। कर रहा है क्या सब लोग। वेरी गुड मानव।
मानव, वेरी गुड। ओम प्रकाश, मानव ने दिया है आंसर्स। ओम प्रकाश और मानव ने आंसर्स दिया है। ठीक है। सो टर्नरी नंबर डिविजिबल बाय 9। जब भी बेस 3 है नंबर, बेस 3 है और 3 पावर 2 है ना, ऐसा पावर्स ऑफ 3 है तो एंडिंग विथ दोज मेनी जीरोस, तो दिस इज एंडिंग विथ 2 zeros, एंडिंग विथ 2 zeros, है ना, दिस इज एंडिंग विथ 2 zeros। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? अल्फाबेट में 0 1 2 है ना, तो 0 + 1 + 2 स्टार, 0 + 1 + 2 स्टार followed by 0 0। तो मिनिमल एनएफए क्या होगा? मिनिमल एनएफए क्या होगा? 0, 1, 2, 0 0 एंडिंग विथ 2 zeros, है ना। मिनिमल डीएफए क्या होगा? ये एंडिंग विथ 2 zeros होना है, एंडिंग विथ 2 zeros होना है, और आगे 1 1 या 2 1 या 2 आएगा, हम वेट करेंगे 0 0 के लिए। अगर इधर 1 या 2 आएगा तो फिर से 0 0 के लिए वेट करेंगे, और इधर भी 1 या 2 आया तो फिर से 0 0 के लिए वेट करेंगे। ठीक है, फिर से 0 0 के लिए वेट करेंगे। वेरी गुड शांतनु, योर आंसर इज राइट। दर्शन, योर आंसर इज राइट। ठीक है, अभी दूसरा मॉडल सॉल्व करते हैं। अभी दूसरा मॉडल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू 0, 1, language equal to binary numbers divisible by 3, binary numbers divisible by 3। ये बाइनरी नंबर्स डिविजिबल बाय 3 होना है। ठीक है, तो कैसे करना है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं है? नहीं सर, एंडिंग विथ 1 1 नहीं है। ठीक है, अगर आप ये नंबर लेंगे तो ये एंडिंग विथ 1 1 है, लेकिन ये 7 है ना। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो एंडिंग विथ 7 नहीं है। इसको अलग तरीका से करना पड़ेगा। ठीक है, 9 इशू 4 स्टेट्स नहीं आएगा। आंसर लिख के टेलीग्राम चैनल पे डाल देना।
Binary numbers divisible by 3. Binary numbers divisible by 3. हाँ दर्शन, 3 स्टेट्स आएगा, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। ऑड लेंथ स्ट्रिंग नीड नॉट बी डिविजिबल बाय 3, राइट? एग्जाम्पल यही ले लो, 111 ऑड लेंथ स्ट्रिंग है। ऑड लेंथ स्ट्रिंग ये 7 है, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ठीक है। तो जनार्दन, यू हैव गिवन एंडिंग विथ 0, है ना? यू हैव गिवन एंडिंग विथ 0, तो ये इधर 0 लगना चाहिए, एंडिंग विथ 0 0, है ना? और इधर भी 0 लगना चाहिए, एंडिंग विथ 0 0। ठीक है, हम जब भी कुछ नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर्स आते हैं। वेरी गुड ओम प्रकाश, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। ओ अच्छा, QS भी डाल दिया आपने, वेरी गुड। ठीक है, आपका आंसर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेरी गुड ओम प्रकाश, मनाओ थोड़ा सा गलत है। ठीक है, जब भी हम एक नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर्स आएगा। For very reminder, there is unique transition. There is unique state. For every reminder, there is unique state. Dashing dancer. ठीक है, तो जब भी हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर्स आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए? रिमाइंडर 0 चाहिए, तो मैं इसको फाइनल स्टेट बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, और जितने भी जीरोस आने दो उसका रिमाइंडर 0 ही होगा। अगर 1 आया तो उसका रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, अभी सोचो हम Q1 में है, अभी सोचो हम Q1 में है, क्या देख के Q1 पे गया? 1 देख के Q1 पे गया। ठीक है, और उसके बाद 0 देखेंगे तो नंबर 2 बन जाएगा। इसके बाद 0 देखेंगे तो नंबर 2 बन जाएगा और रिमाइंडर 2 होगा। ठीक है, और अभी हम Q1 में है, 1 देख के आया है, उसके बाद अगर 1 देखेंगे तो नंबर 3 बन जाएगा, 1 1 3 बन जाएगा, तो रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो Q1 कंप्लीट है। अभी हम Q2 में है, 1 0 देख के Q2 में आया है। ठीक है, और अगर उसके बाद 0 देखा है तो नंबर 4 बन गए और रिमाइंडर 1 बन गया, नंबर 4 बन गया और रिमाइंडर 1 बन गया। ठीक है, अगर हम Q2 में है, 1 0 देख के Q2 में आया है, उसके बाद अगर 1 देखेंगे तो नंबर क्या बन गया? नंबर 5 बन गया। ठीक है, और रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा, नंबर 5 बन गया और रिमाइंडर 2 होगा। ठीक है,
तो ऐसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसके लिए शॉर्टकट बताऊंगा मैं इसके लिए शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट क्या होगा कि आप टेबल फॉर्म में लिखो, टेबल फॉर्म में लिखो। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, Q0 है, Q1 है और Q2 है। Q0 है, Q1 है और Q2 है। ठीक है, और इनपुट अल्फाबेट में 0 1 है। आप ऐसा लिख लेना, Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2। अभी ये दोनों सेम होगा, अभी ये दोनों सेम होगा, ये शॉर्टकट है। डायरेक्टली Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 लिख देंगे। ठीक है, और ये इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट भी है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वेरी गुड दर्शन। दर्शन चौबे, वेरी गुड। सौम्यदीप थोड़ा सा गलत है। अच्छा, आपने QS भी डाल दिया, ठीक है, सही है, सही है सौम्यदीप। ठीक है, तो ये है आंसर, शॉर्टकट। और इसमें थोड़ा सा गलत है, ये इसमें थोड़ा सा गलती है। क्या गलती है कि ये इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बन गया है ना, तो लैंग्वेज में एप्सिलॉन हो सकता है। ये इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बन गया है ना, तो लैंग्वेज में एप्सिलॉन आ जाता है। ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन एक नंबर नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा दिया है कि कंसिडर एप्सिलॉन एज 0, तो ये सही है, एप्सिलॉन 0 है तो ये टेबल सही है। अगर एग्जाम में ये दिया है कि कंसिडर एप्सिलॉन इज नॉट 0, एप्सिलॉन इज नॉट ए नंबर, तो हमको एप्सिलॉन का एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हम नया इनिशियल स्टेट ऐड करेंगे। ठीक है, नया इनिशियल स्टेट ऐड करेंगे और 0 पे Q0 पे जाएगा और 1 पे Q1 पे जाएगा, 1 पे Q1 पे जाएगा। ठीक है, और ये टेबल में भी इसको Q1 को इनिशियल स्टेट नहीं करेंगे, नया स्टेट ऐड करेंगे QS इनिशियल स्टेट, और वो 0 पे Q0 पे जाएगा और 1 पे Q1 पे जाएगा, 0 पे Q0 पे जाएगा और 1 पे Q1 पे जाएगा, 1 पे Q1 पे जाएगा, 1 पे Q1 पे जाएगा। ठीक है, श्रेया थोड़ा सा गलत है आपका आंसर, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो पूरा कंस्ट्रक्शन तो इजी है, और क्या इनिशियल स्टेट होना चाहिए वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन पे बोलेंगे कि कंसिडर एप्सिलॉन एज 0, तो हम Q0 को ही इनिशियल स्टेट रखेंगे। अगर क्वेश्चन में ये बोलेंगे कि डोंट कंसिडर एप्सिलॉन एज 0, तो नया इनिशियल स्टेट ऐड करेंगे QS, नया इनिशियल स्टेट ऐड करेंगे QS। ठीक है, ठीक है, अभी इसका आंसर करना। बेस 4 नंबर है, सिग्मा इक्वल टू 0 1 2 3 4, और
L equal to base 4 numbers divisible by 3. बेस 4 नंबर्स डिविजिबल बाय 3. आप डायरेक्टली शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में. सर आपको ट्रांजिशन 2 के तरफ दिख रहा है. सर आपको ट्रांसलेटर 2 के तरफ दिख रहा है. ट्रांसलेटर 2. ठीक है, इसका आंसर करना बेस 4 नंबर डिविजिबल बाय 3. बेस 4 नंबर डिविजिबल बाय 3. आंसर टेलीग्राम चैनल पे डाल देना. ये करके आंसर टेलीग्राम चैनल पे डाल देना. शॉर्टकट यूज कर सकते हो आप. आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ठीक है. तो बेस 4 नंबर है, मतलब इनपुट में क्या आएगा, 0 1 2 3 आएगा और डिविजिबल बाय 3 है, मतलब Q0 होगा, Q1 होगा और Q2 होगा. 3 स्टेट्स डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 स्टेट्स आएगा. ठीक है, आप सिर्फ इधर फिल करना है Q0 Q1 Q2 Q3 Q0 Q1 Q2 और फिर Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2. बस इतना ही, ठीक है. और ये फाइनल स्टेट होगा, ठीक है, ठीक है. ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्टेट QS ऐड करना है तो एग्जाम में देना पड़ेगा कि अभी ये इसको ही इनिशियल स्टेट ही रहेंगे, ठीक है, रखेंगे, लेकिन एग्जाम में ये बोलेंगे कि एप्सिलॉन इज नॉट एक्सेप्टेड और एप्सिलॉन इज नॉट 0, तो नया इनिशियल स्टेट ऐड करना पड़ेगा आपको. नया इनिशियल स्टेट ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है. नया इनिशियल स्टेट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. तो अगर ऐसा दिया है L equal to all binary numbers L equal to all binary numbers divisible by 3 and starts with 1. All binary numbers divisible by 3 and starts with 1. L equal to all binary numbers divisible by 3 and starts with 1. मतलब 3 से डिवाइड होना है नंबर और स्टार्टिंग में 1 होना है, ठीक है. तो एवरीथिंग रिमेन्स सेम, मतलब आपको यही आएगा, Q0 आएगा, Q1 आएगा और Q2 आएगा. इसको
वैसे ही फिल करना जैसे पहले फिल किया था, लेकिन स्टार्टिंग स्टेट जो भी है, सो नंबर शुड बी स्टार्टिंग विथ 1, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ तो Q1 में जाएगा, अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो डेड स्टेट में जाएगा। 1 से स्टार्ट किया तो Q1 में जाएगा, 0 से स्टार्ट हुआ तो डेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ तो Q1 में जाएगा, 0 से स्टार्ट हुआ तो डेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक मॉडल की क्वेश्चंस है, डिविजिबल बाय। ठीक है, तो 1 घंटा हो गया है, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे 3 मिनट के लिए और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा 3 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, तो आप टेबल में करना। अगर एग्जाम में स्टेट ट्रांजिशन टेबल दिया तो ठीक है, अगर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिया तो टेबल में करके आप आंसर कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसका करेंगे। सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी, sigma equal to a comma b, language equal to set of all strings w such that w starts with a and ends with b. w starts with a and ends with b. a से शुरू होना है और b से एंड होना है। a से शुरू होना है और b से एंड होना है। a से शुरू होना है और b से एंड होना है। निशु आंसर लिख के पेपर में करके टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। सब लोग आंसर पेपर में करके प्रैक्टिस हो जाएगा ना। आंसर पेपर में करके टेलीग्राम चैनल पे लिख लेना। रेगुलर एक्सप्रेशन देना, एनएफए देना और डीएफए देना। ठीक है, और आंसर पेपर पे लिख के टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ बी। आंसर पेपर पे लिख के टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। आंसर पेपर पे लिख के टेलीग्राम चैनल पे डाल देना। स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। ठीक है, वेरी गुड जनार्दन। और एनएफए में लूप लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? स्टार्टिंग विथ ए, बीच में कुछ भी आएगा एंडिंग विथ बी। स्टार्टिंग विथ ए, बीच में कुछ भी आएगा एंडिंग विथ बी। तो मिनिमल एनएफए क्या होगा? मिनिमल एनएफए क्या होगा? स्टार्टिंग विथ ए,
और बीच में कुछ भी आएगा और एंडिंग विथ बी, ये है मिनिमल एनएफए, है ना। और मिनिमल डीएफए क्या होगा? मिनिमल डीएफए क्या होगा? अगर ये से स्टार्ट हुआ तो बी से एंड होना है ना। ये से स्टार्ट हुआ तो बी से एंड होना है। अगर बी से स्टार्ट हुआ तो ये से एंड होना है, ये से एंड होना है, ठीक है। और जितने भी ये आने दो, बी आए तो एंडिंग विथ ए भी होगा, एंडिंग विथ बी होगा। और जितने भी बी आने दो एंडिंग विथ बी है। अगर ये आया तो वेट फॉर बी सो दैट इट विल एंड विथ ए बी, ठीक है। और जितने भी बी आने दो ये के लिए वेट करेंगे। जितने भी ये आने दो एंडिंग विथ ये ही है। अगर बी आया तो वापस जाएंगे, ए के लिए वेट करेंगे, ठीक है। हाँ ओम प्रकाश, यू आर राइट, ठीक है। ये है मिनिमल डीएफए, ये है मिनिमल डीएफए, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी है ना। बी से शुरू हुआ तो डेड स्टेट डाल देंगे, बी से शुरू हुआ तो डेड स्टेट डाल देंगे। स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी। अगर बी से शुरू हुआ तो डेड स्टेट में डाल देंगे। ए से शुरू हुआ तो बी से एंड होना है, ए से शुरू हुआ तो बी से एंड होना है, ठीक है। इसका बता देना। सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी, starts and ends with different symbol. Starts and ends with different symbol. Starts and ends with different symbol. मतलब ये से शुरू हुआ तो बी से एंड होना है, बी से शुरू हुआ तो ए से एंड होना है। आप अपना नाम रख लीजिए टेलीग्राम चैनल पे, नाम प्लस लिखा है, डॉट 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 प्लस डॉट डॉट। ये कौन सा नाम है? नोटबुक में करके पिक्चर डालना टेलीग्राम चैनल पे, एक पेपर पे करके पिक्चर डालना टेलीग्राम चैनल पे। Starts and ends with different symbol. Starts and ends with different symbol. सत्यवंत सिंह 5 स्टेट्स आया है, वो एनएफए का है या डीएफए का है?
निशु सही है। आप आंसर को पेपर पे लिख के टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हो ना। सही है सत्यवान, लेकिन आप आंसर को लिख के टेलीग्राम चैनल पे डाल देना, ठीक है। तो starts and ends with different symbol. ए से शुरू हुआ तो बी से एंड होना है, बी से शुरू हुआ तो ए से एंड होना है, ठीक है। ए से शुरू हुआ है तो बी से एंड होना है, बी से शुरू हुआ है तो ए से एंड होना है, ठीक है। तो अगर ए से शुरू हुआ तो बी से एंड होना है, अगर बी से शुरू हुआ तो ए से एंड होना है। ये है मिनिमल एनएफए, ये है मिनिमल एनएफए, ठीक है। और मिनिमल डीएफए क्या होगा? अगर ये से शुरू हुआ है तो बी से एंड होना है, अगर बी से शुरू हुआ है तो ये से एंड होना है, ठीक है। और जितने भी येस आने दो बी के लिए वेट करेंगे, और जितने भी बीस आने दो एंडिंग विद बी है। अगर इधर ये आया तो फिर से बी के लिए वेट करेंगे, सो दैट इट विल एंड विथ ए बी, सो दैट इट विल एंड विथ ए बी, ठीक है। और जितने भी बीस आएगा ये के लिए वेट करेंगे, और जितने भी एस आएगा एंडिंग विथ ये है, और अगर बी आएगा तो फिर से ये के लिए वेट करेंगे। ये है मिनिमल डीएफए, ये है मिनिमल डीएफए, ठीक है। ये है मिनिमल डीएफए, ठीक है। वेरी गुड ओम प्रकाश, वेरी गुड ओम प्रकाश, and your writing is very nice, and your writing is very nice, ठीक है। अभी इसका करना सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए, starting and ending with a. Sigma equal to a comma b, starting and ending with a. इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेना।
starting and ending with a, पहले आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेना। टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेना आप इसका। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन सही आया तो आंसर आ जाएगा। वही तो बोल रहा था, रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेना पहले। तो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा ये स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ ये प्लस ये फॉलोड बाय ये प्लस बी स्टार फॉलोड बाय ये। ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ये, इधर भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ये है, इधर भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ये है, इधर भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ये है। ठीक है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ये को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो मिनिमल एनएफए क्या होगा? मिनिमल एनएफए क्या होगा? अगर ये है तो एक्सेप्ट करेंगे डायरेक्टली, नहीं तो स्टार्टिंग विथ ये होना चाहिए और बीच में कुछ भी आने दो, एंडिंग विथ ये होना चाहिए, एक्सेप्ट करेंगे। ये है मिनिमल एनएफए। ठीक है, और मिनिमल डीएफए लिखेंगे। मिनिमल डीएफए स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है? ये को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये को एक्सेप्ट करेंगे, ये को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग विथ बी हुआ हम उसको मार देंगे डेड स्टेट पे। स्टार्टिंग विथ बी हुआ तो मार देंगे डेड स्टेट पे। ठीक है, और जितने भी एस आने दो, एंडिंग विथ यही है। ठीक है, अगर एक बी आया है तो हमको फिर से एंडिंग विथ ए के लिए देखना है, लेकिन पीछे मत जाना। अगर बी आया तो एंडिंग विथ बी ए के लिए देखना है ना, पीछे मत जाना, क्योंकि पीछे गया तो डेड स्टेट में जाने का पॉसिबिलिटी है। ऑलरेडी हमने डेड स्टेट को पास किया है, मतलब स्टार्टिंग विथ ये हो गया है, तो फिर से वापस नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टिंग विथ ये हो गया है। उसके बाद स्टार्टिंग विथ बी को चेक करने का जरूरत नहीं है, वापस मत जाना। ठीक है, तो अगर बी आया तो नया स्टेट में जाके रुकना। ठीक है, और जितने भी बीस आएगा उधर ही रुकना। अगर ए आया तो एंडिंग विथ ये है, अगर ए आया तो एंडिंग विथ ये है। ठीक है, ये क्या है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ये है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ये है। ठीक है, और अभी इसका करना, सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल।
स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल, इसका करना स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल। पहले रेगुलर एक्सप्रेशन देना और उसके बाद NFA और DFA करना। स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल। और भी आएगा ओमकार। स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना। स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल। कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं दिया। ओम प्रकाश, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं है, इसीलिए आपका आंसर गलत आया है। ठीक है, तो पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना। स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल मतलब एप्सिलॉन स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ सेम सिंबल, ए स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ सेम सिंबल, बी स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ सेम सिंबल, और ए के बाद कुछ भी आने दो स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ ए, और बी के बाद कुछ भी आने दो स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ बी एंड एंडिंग विथ बी, स्टार्टिंग विथ बी एंड एंडिंग विथ बी। ठीक है, और मिनिमल NFA क्या होगा? मिनिमल NFA क्या होगा? एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करना है तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट होगा। जब भी NFA या DFA में एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करना है तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बनेगा। ठीक है, और ए कामा बी को एक्सेप्ट करना है, ए कामा बी को एक्सेप्ट करना है, और ए के बाद कुछ भी आ सकता है, और एंडिंग विथ ये हो सकता है, और बी के बाद कुछ भी आ सकता है और एंडिंग विथ बी होगा, एंडिंग विथ बी होगा।
एंडिंग विद बी होगा। ठीक है, ये है मिनिमल एनएफए, ये है मिनिमल एनएफए। ठीक है, ये है मिनिमल एनएफए। तो मिनिमल डीएफए क्या होगा? एप्सिलॉन लैंग्वेज में है तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट होगा। अगर स्टार्टिंग विथ ये है तो एंडिंग विथ ये होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम ये को एक्सेप्ट करना है, मिनिमम ए को एक्सेप्ट करना है, और जितने भी एस आएगा वो स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ ए ही है। ठीक है, और बी से शुरू हुआ तो बी को एक्सेप्ट करना है, और जितने भी बीस आया स्टार्टिंग विथ बी एंडिंग विथ बी है, स्टार्टिंग विथ बी एंडिंग विथ बी है। ठीक है, और इधर बी आया तो दूसरा स्टेट में जाके वेट करना, और जितने भी बीस आया उधर ही वेट करना। अगर ए आया तो एंडिंग विथ ये है। ठीक है, अगर ये आया तो दूसरा स्टेट में जाके वेट करना, जितने भी एस आया उधर ही वेट करना, और बी आया तो एंडिंग विथ बी है, बी आया तो एंडिंग विथ बी है, बी आया तो एंडिंग विथ बी है। ठीक है sir, if the question is starting and ending with different symbols then we can include A and B, since नहीं नहीं ऐसा इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। आपका एनालिसिस अच्छा है, लेकिन ये डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू ये है ना। प्यार का परमाणु, आपका एनालिसिस अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल। ठीक है, अगर आप एक बात देखेंगे, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ डिफरेंट सिंबल, ये दोनों को देखेंगे तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट है। मतलब फाइनल स्टेट नॉन फाइनल स्टेट, इधर फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बनाएंगे, और इधर नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल स्टेट बना के फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बनाएंगे तो एक ही आएगा। तो इधर एक छोटा सा ये लेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये बताओ, आप ये बताओ ये क्या लैंग्वेज है? ये क्या लैंग्वेज है? ये क्या लैंग्वेज है? ये एनएफए है या डीएफए है? वेरी गुड सतपन, ये है एंडिंग विथ ये, है ना। ये डीएफए है, ये डीएफए है, और लैंग्वेज क्या है? एंडिंग विथ ये है। लैंग्वेज क्या है? एंडिंग विथ ये है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? एंडिंग विथ ये है। दो इनपुट ध्यान से।
It is a DFA ending with a A, right? Now I will take a complement of this. I will take complement of this. What is complement? Complement मतलब क्या है इधर? तो फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बनाना है और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाना है, ठीक है? फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल स्टेट बनाना है, ठीक है? तो ये नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाता हूँ और ये फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बनाता हूँ, ठीक है? और सब कुछ वैसे ही रहेगा, ट्रांजिशंस वैसे ही रहेगा। फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बना दिया, नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया। अभी ये लैंग्वेज क्या है? ये लैंग्वेज क्या है? जब मैं फाइनाइट ऑटोमेटा को कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ये लैंग्वेज क्या है? वेरी गुड सत्यवंत सिंह, वेरी गुड। तो इसमें एप्सिलॉन आएगा प्लस एंडिंग विद बी आएगा, एप्सिलॉन आएगा प्लस एंडिंग विद बी आएगा, इसमें एप्सिलॉन आएगा प्लस एंडिंग विद बी आएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं? नॉट एंडिंग विथ ये बोल सकते हैं, नॉट एंडिंग विथ ये बोल सकते हैं, ठीक है? तो whenever we complement a DFA, the language gets complemented. जब भी DFA को complement करते हैं ना तो language gets complemented, लेकिन NFA में there is no guarantee, NFA में there is no guarantee, ठीक है? अभी इसका बताना ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? वेरी गुड। NFA ends with ये, है ना? ये है NFA और द लैंग्वेज क्या है? ends with ये। लैंग्वेज क्या है? ends with ये, है ना? अगर इसको कॉम्प्लीमेंट करूं, अगर इसको कॉम्प्लीमेंट करूं तो नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाना, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बनाना, ठीक है? नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाना और फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बनाना, ठीक है? तो ये भी NFA है, तो लैंग्वेज क्या है? ये भी NFA है, तो लैंग्वेज क्या है इधर? वेरी गुड सत्यवंत सिंह, वेरी गुड सत्यवंत सिंह, वेरी गुड। ठीक है, इसका लैंग्वेज क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज, है ना? ए प्लस बी स्टार, ठीक है? तो तो जब हम NFA को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल ले लो, ये बोथ DFA एंड NFA है ना?
ये DFA है, एवरी DFA इज NFA। तो ये एग्जाम्पल में ये NFA को कॉम्प्लीमेंट करने से लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट हुआ है। ये एग्जाम्पल में ये NFA को कॉम्प्लीमेंट करने से लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन DFA को कॉम्प्लीमेंट करने से लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, तो क्या इसमें से क्या सीखना पड़ेगा? जब भी हम DFA को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट होता है, और NFA को जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये मत बोलना कि कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक NFA भी है ना। एवरी DFA इज NFA। अगर ये NFA को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट हो रहा है ना, तो NFA को कॉम्प्लीमेंट करने से लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन DFA को कॉम्प्लीमेंट करने से जरूर लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये बात सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल से ये पॉइंट सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है? अगर अगर एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, ठीक है, अगर एक फाइनाइट ऑटोमेटा है और एक बात इधर, इफ इट इज ए NFA एंड नॉट ए DFA, तो कॉम्प्लीमेंटेशन मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, और एक फाइनाइट ऑटोमेटा है Q सिग्मा डेल्टा Q0 F, एक फाइनाइट ऑटोमेटा है और उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हम। मतलब क्या कर रहा है इधर? एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा है और उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो क्या कर रहा है हम? ठीक है, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बनाना और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट बनाना। मतलब Q सिग्मा डेल्टा Q0, Q सिग्मा डेल्टा Q0 और Q माइनस F। मतलब जो भी नॉन फाइनल स्टेट्स है उसको अभी फाइनल स्टेट बनाया, और जो भी फाइनल स्टेट्स है उसको नॉन फाइनल बनाया। ठीक है, इधर इधर Q माइनस F लिखेंगे तो फाइनाइट ऑटोमेटा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू A comma B, first two symbols are same। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन देना, NFA एंड DFA देना, टेलीग्राम चैनल पे आपका आंसर पोस्ट कर देना। टेलीग्राम चैनल पे आपका आंसर पोस्ट कर देना। ठीक है, starting two symbols are same। Very good, Satyavan, your regular expression is right। Plus your regular expression is right। What is your name? Plus you have put your name as dot 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 plus dot dot। What is your actual name? Nishu। Okay, Nishu, your regular expression is right। So can you give NFA and DFA and post it on Telegram channel? Can you give NFA and DFA and post it on Telegram channel?
Very good, Mahi. वाह, ओमकार ने आंसर भी दिया है। ओमकार वेरी गुड। और कोई? सत्यवान, योर NFA इज राइट। DFA लेना। सत्यवान सिंह, योर NFA इज राइट। DFA करना। Yes, DFA is correct, Satyavan. Janardhan, your answer is half right. Okay, so I will give you the solution. First two symbols are same, right? First two symbols are same. So regular expression is AA followed by A plus B star, or BB followed by A plus B star. You can write it as AA plus BB followed by A plus B star. AA plus BB followed by
A plus B star, right? So minimal NFA will be AA, AA followed by A plus B star or BB followed by A plus B star, right? Now if you look at this NFA, in this NFA अगर आप देखेंगे तो एक स्टेट एक सिंबल पे दो स्टेट्स पे नहीं जा रहा है, ठीक है? इसमें सिर्फ मिसिंग एडजेस है बस। ये एनएफए में सिर्फ मिसिंग एडजेस है। एक स्टेट एक ही सिंबल को देके दो स्टेट्स में नहीं जा रहा है, इसमें सिर्फ मिसिंग एडजेस है, इसमें सिर्फ मिसिंग एडजेस है ना? तो अगर वो मिसिंग एडजेस डाल देंगे तो खत्म हो जाएगा बस। इधर मिसिंग एज है बी का, इधर मिसिंग एज है ए का, बस ये दोनों का मिसिंग एडजेस को डेड स्टेट में डाल देना, तो ये बन गया मिनिमल डीएफए, ठीक है? मिसिंग एडजेस को डेड स्टेट में डाल देना बस। इसमें ए एग्जाम्पल में ये पॉसिबल है, सारा एग्जाम्पल्स में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एनएफए में एक स्टेट एक सिंबल को देख के एक ही स्टेट पे जा रहा है और कुछ मिसिंग एडजेस है। अगर एनएफए ऐसा है तो डीएफए में कन्वर्ट करना इजी है, जो भी मिसिंग एडजेस है उसको डेड स्टेट पे डाल देना, जो भी मिसिंग एडजेस है उसको डेड स्टेट पे डाल देना, ठीक है? ठीक है? सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी, language equal to last two symbols are same, last two symbols are same, last two symbols are same. Write the regular expression NFA and DFA. Write the regular expression NFA and DFA, right? Write the DFA. Yeah, Nishu and Janardhan, your regular expressions are right. Draw the NFA and DFA and post it on the channel. Draw the NFA and DFA and post it on the Telegram channel.
Very good, Om Prakash. Your DFA and NFA are right. Very good, Satyavan. Mahi, yeah, your answer is right. Okay. Mahi, your answer is not a DFA, right? It is still a NFA. Yeah, Satyavan, your answer is right. Okay. So, last two symbols are same. The last two symbols are same. Regular expression is A plus B star followed by AA plus BB. Last two symbols are same, right? So, minimal NFA is initially there can be anything. Last two symbols have to be same. The last two symbols have to be same, right? Right. Now, minimal DFA, right? Last two symbols have to be AA or BB, right? Last two symbols have to be either AA or last two symbols have to be either BB, right? Now after two A's, any number of A's come, it is ending with AA only. After two B's, any number of B's come, it is ending with BB only. BB only, right? Now here if I get a B, I may get one more B and it may end with BB, right? Right? And here if I get a B, I may get one more B and end with BB, end with BB, right? Right? Here if I get a I may get one more A and end with AA. Here if I get a I may get one more A and end with AA and end with AA, right? So this is the minimal DFA. This is the minimal DFA, okay? Okay. So it's been 1 hour, 2 hours. Let's take a quick break for 3 minutes. Let's take a break for 3 minutes. After that, we'll continue. Okay. Let's take a break for 3 minutes. After that, we'll continue.
ठीक है. So what is the problem? Okay. So sigma equal to a comma b, sigma equal to a comma b, last two symbols are different. Sigma equal to a comma b, last two symbols are different. Last two symbols are different. Sigma equal to a comma b, last two symbols are different. Give the regular expression NFA and DFA. Give the regular expression NFA and DFA. Very good, Satya. Satyavan Singh. Satyavan Singh, very good. Regular expression is fine. U, DFA and NFA. Regular expression is fine. U, DFA and NFA. You can have infinite number of regular expressions if the language is infinite. If the language is infinite, you can have infinite number of regular expressions. ये क्या नाम है? प्यार का परमाणु. ये क्या नाम है? Very good, Om Prakash. Any more answers, guys? Last two symbols are different. Om Prakash has given the answer.
Yeah, Satyavan Singh, right. Satyavan Singh, you are given DFA. You have not given regular expression and NFA. Last two symbols are different. Very good, Janardhan. Yeah, Satyavan. What is your name, Pyar Ka Parmano? Yeah, Satyavan. Okay. So let me answer this. Last two symbols are different. Last two symbols are different. So regular expression is going to be A plus B star. Last two symbols can be AB or BA. Last two symbols can be AB or BA, right? Now, what is the minimal NFA? Minimal NFA is initially there can be anything, but last two symbols have to be different, either AB or BA, either AB or BA, either AB or BA. What about DFA? So DFA is, try DFA. DFA is little bit tricky. Try DFA and write it in the Telegram channel. Try DFA and write it in the Telegram channel. So if you start, it should end with AB, right? It should end with AB. Or it should end with BA. It should end with BA. It should end with AB or it should end with BA.
right? Right? Now any number of A's may come here. It can still end with a AB. Any number of B's may come here. It may still end with a BA. It may still end with a BA. Right? Right? Now after AA, so this state is complete, A and B are given, this state is complete, A and B are given, right? 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 Now after a B, if I get a, after a B, if I get a, it is ending with BA, it is ending with BA, right? Now if I get a B here, it may end with a BA, it may end with a BA, right? Similarly, if I get a B here, it is ending with AB, it is ending with AB, right? And if I get a here, if I get a here, it may end with a BA. If I get a here, it may end with a AB. It may end with a AB, right? So this is the minimal DFA. This is the minimal DFA, right? Now, sigma equal to 0, comma 1, sigma equal to 0, comma 1, ending with 1 0 or 1 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 1. Use the regular expression DFA and NFA. Use the regular expression NFA and DFA. Give the regular expression NFA and DFA. One zero or 1 1. It is not 1 0 or 0 1. No, Mahi. Regular expression is not different for NFA and DFA. One zero or 1 1. Sigma equal to 0 comma 1, ending with 1 0 or 1 1. Ending with 1 0 or 1 1. Write the regular expression
NFA and DFA and post it in the Telegram channel. Very good. So let me answer this. Ending with 10 or 11, right? I will answer this. So what is the regular expression? Regular expression is 0 plus 1 star followed by 10 or 11. 10 or 11. You can also write it as 0 plus 1 star followed by 1 followed by 0 plus 1. You can also write it like this. Now if you write it like this, NFA will be easy, right? So NFA will be 0 comma 1 star followed by 1 followed by 1 or 0. This is the NFA. 10 or 11, right? Now what about DFA? So this is minimal NFA. This is minimal NFA. This is minimal NFA, right? Now what about minimal DFA? What about minimal DFA? So initially any number of zeros may come. Any number of zeros may come. We will wait for either 10 or 11. 10 or 11 will accept. 10 or 11 will accept, right? Now here if I get a 0 that is ending with 10, isn't it? Ending with 10, right? Any number of ones I get, it is ending with 11 only. It is ending with 11 only, right? Right? Now if I get a 0 here, now if I get a 1 here, again it has to end with 10 or 11. Now if I get a 0 here, I have to entirely wait for 10 or 11. If I get a 0 here, because sequence is spoiled, right? So after 10, if I get a 0, again I have to wait for 10 or 11. That is why I am going to the initial state and waiting for 10 or 11. 10 or 11. Right? Right? So answer this question. Sigma equal to A comma B. Sigma equal to A comma B. First two symbols are different. First two symbols are different. Sigma equal to A comma B. First two symbols are different.
Very good, Satyavan. Very good, Satyavan. Vignesh, you have to add few more edges. So 1 0 and 1 1 you have to accept, right? You are accepting 1. Your finite automata is accepting 1. 1 is not there in the language. Vignesh, your automata is accepting 1. 1 is not in the language. Okay? Very good study for AI. Very good, Satyavan. Very good, Satyavan. And study for AI. So, first two symbols are different, right? So, what do I mean by first two symbols are different? First two symbols can be AB or BA, right? So, if you look at the regular expression, if you look at the regular expression, if you look at the regular expression, first two symbols are different, right? Which means AB plus BA followed by A plus B star, right? And if you look at minimal NFA, if you look at minimal NFA, it will have AB followed by A plus B star or BA followed by A plus B star. This is minimal NFA. Now you can convert this minimal NFA into DFA directly because क्योंकि एक स्टेट एक सिंबल को देख के दो स्टेट्स में नहीं जा रहा है, ठीक है, सिर्फ मिसिंग एडजस्ट है इसमें, और जो भी मिसिंग एडजस्ट है उसको डेड स्टेट में डाल देना, ठीक है। तो मिनिमल डीएफए क्या होगा, ये जो भी मिसिंग एडजस्ट है, ये जो भी मिसिंग एडजस्ट है उसको डेड स्टेट में डाल देना, ठीक है, उसको डेड स्टेट में डाल देना जो भी मिसिंग एडजस्ट है उसको डेड स्टेट में डाल देना, ठीक है। नाउ sigma equal to 0 comma 1 starting with 1 1 and ending with 1 1, starting with 1 1 and ending with 1 1 starting with 1 1 and ending with 1 1.
अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन सही लिखा तो इसको आंसर कर सकते हैं। निशु, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ मिसिंग है। निशु, आपका रेगुलर एक्सप्रेशन में कुछ मिसिंग है। हाँ सत्यवन, पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो, तब एनएफए डीएफए कर सकते हो। पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो। सर, आई डिड माई बीएस इन मैथमेटिक्स, नाउ आई एम इन एमएससी कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर, I want to write GATE, but I don't know how to start preparation. Can you guide me so I can start my preparation? Join physics वाला batch, paid batch MK. You can start your preparation. Satyavan, your regular expression is not right. Starting with 1 1 and ending with 1 1, right? No one has given correct regular expression. No one has given correct regular expression. Very good. Vignesh has given correct regular expression. And DFA is also right. Only one person has given regular expression, right? What about others? Okay, I'll solve this. Starting with 1 1 and ending with 1 1 means first you have to write the regular expression right. The problem is you are not writing the correct regular expression. Okay, what is the correct regular expression? 1 1 starts with 1 1 and ends with 1 1, and 1 1 1 also starts with 1 1 and ends with 1 1, and then 1 1 followed by 0 plus 1 star followed by 1 1. Okay, so it should start with 1 1, starting with 1 1, right? So it should start with 1 1 and end with 1 1. So smallest string that you have to accept is 1 1, right? So smallest string that you have to accept is 1 1, and it has to start with 1 1. If it is starting with 0 or if it is starting with 1 0, we are going to kill it. If it is starting with 0 or it is starting with 1 0, we are going to kill it. We are going to kill it, right? Now any number of ones may come, it is starting and ending with 1 1 only, right? Now if I get a 0, I have to wait for complete 1 1.
if I get a 0, I have to wait for complete 1 1. Complete 1 1. Right? Any number of zeros, I have to wait for complete 1 1. And in between this 1 1, if I get a 0, again I have to wait for complete 1 1. Again I have to wait for complete 1 1. So this is the minimal DFA. This is the minimal DFA. Right? Now answer this question. Sigma equal to 0 comma 1, starting with 1 0, ending with 0 1. Write the regular expression correctly. Okay, starting with 1 0, ending with 0 1. Starting with the 1 0, ending with 0 1. Starting with 1 0, ending with 0 1. Write the regular expression correctly. Then you will be able to answer it. Write the regular expression correctly. Very good, Satyavan Singh. Your regular expression is right. Now give the DFA. Very good study for AI. Now you are able to write the regular expression correctly. Very good, Nishu. Now your regular expression is right. Try to give DFA for this. Your regular expression is right. Try to give DFA for this.
Very good, Vignesh. Very good, Satyavan. So, starting with 1 0, ending with 0 1, right? So, let's see the regular expression for this. The regular expression is 1 0 1 starts with 1 0, ends with 0 1, and then 1 0 followed by 0 plus 1 star followed by 0 1. 1 0 followed by 0 plus 1 star followed by 0 1, right? Right? So, what is the smallest string you have to accept? 1 0 1. So, the smallest string you have to accept is 1 0 1. 1 0 1 is the smallest string that you have to accept, right? Right? Now, if it is starting with 0, you are going to kill it. You are going to kill it. If it is starting with 1 1, you are going to kill it. You are going to kill it, right? Now, after a 1 0, any number of zeros may come, still it may end with 0 1. Still it may end with 0 1. Still it may end with 0 1, right? Now, after a 1, a 0 may come, again it has to end with 0 1. Again it has to end with 0 1. Again it will end with 0 1. After a 1, if a 0 comes, again 0 1 has to come. After a 1, after 1 0 1, if a 1 comes, I will go and wait for a 0. If a 1 comes, I will wait for a 0. I will wait for a 0 so that it will end with 0 1. So that it will end with 0 1. So this is the minimal DFA. This is the minimal DFA. This is the minimal DFA, right? Now tell me about this. Sigma equal to A comma B. Sigma equal to A comma B. L equal to set of all strings W such that if A is present in W, if A is present in W, then it is always followed by a B. Then it is always followed by a B. Then it is always followed by a B. If A is present in the language, then it is always followed by a B. If A is present in the language, then it is always followed by a B. The meaning is if A is present, then it is always followed by a B. If A is not present, you have to accept everything. The condition is only if A is present. Mahi, you just test with strings. What is the minimum string accepted? Is it accepting any string which is not in the language? Like that you need to test. Okay.
Study for AI, you cannot generate AB with this. With this regular expression, you cannot generate AB. Satyavan, you cannot generate AB. You cannot generate AB. Very good, Vignesh, but your regular expression is not right, but your DFA is right. Vignesh, you cannot generate AB. You will be able to generate AB, but you will not be able to generate AB. AB is also AB is also in the language, right? Write the regular expression properly. Shantanu, your language will generate AA. AA is not in the language. A should always be present. A should always be followed by a B. Your language will generate AA. You are writing AAB, right? Your language is generating AA. Your language is generating AA. I think you are right, Satyavan, but you can even write it in a simpler way. Mahi, your language cannot produce AB. Your regular expression cannot produce AB, Mahi. And Vignesh, your language cannot generate AB. Okay. So let me answer this. First, you write down the language. If A is present, it should always be followed by a B, right? If A is not present, that is fine. So language will contain epsilon. Because A is not present, it is fine. B, A is not present, B, so on, which means you are going to get B star in the language. Because the condition is only when A is present. If A is not present, you accept everything, right? Now, A is present, then it has to be followed by a B. Now, AB can be present, or ABB can be present, or BAB can be present, or BBAB can be present, so on, right? Now, if you look at the regular expression is B plus AB star. Whenever there is a B, it should always be followed by a B. Whenever there is a, it should always be followed by a B. And B's can be present. B's तो कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन A के बाद जरूर B आना चाहिए. B तो कुछ भी नंबर में आ सकता है, ठीक है? तो ए बी के आगे जितने भी बीस आ सकता है, ए बी के बाद जितने भी बीस आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ठीक है, तो अभी इसका डीएफए ट्राई करना. तो अभी इसका डीएफए ट्राई करना. अभी इसका डीएफए ट्राई करना. मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया है और लैंग्वेज भी दिया है. अभी इसका डीएफए ट्राई करना, ठीक है?
अभी इसका डीएफए ट्राई करना। Okay, I will do the DFA. So you may think that आप ऐसा सोच सकते हैं कि डीएफए ऐसे कर सकते हैं, बी स्टार को एक्सेप्ट करना है, एप्सिलॉन का एक्सेप्ट करना है, तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट बन जाएगा एप्सिलॉन का एक्सेप्ट करने के लिए, और बी स्टार को एक्सेप्ट कर सकते हो, और उसके बाद अगर ये आया तो ये ऑलवेज बी से फॉलो करना है, ए को बी फॉलो करना है, ठीक है। तो ये बी, और जितने भी बीस आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये आया तो फिर से हमको ए को बी फॉलो करना है, लेकिन ए के बाद ये नहीं आना है, ठीक है। अगर ए के बाद ये आया तो हम मार देंगे, ठीक है। तो ये डीएफए बन गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मिनिमल डीएफए नहीं है ना। बाद में मैं दिखाता हूँ डीएफए को मिनिमाइज कैसे करना है, लेकिन इधर इंट्यूशन यूज करके भी कर सकते हो। देखना, ये स्टेट बी पे फाइनल स्टेट पे जा रहा है, और ये पे स्टेट ए पे जा रहा है, और ये स्टेट बी पे फाइनल स्टेट पे जा रहा है, और ये पे स्टेट ए पे जा रहा है, दोनों एक ही तरफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये दोनों को मर्ज कर सकते हैं, ये दोनों स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं और सिंगल स्टेट बना सकते हैं। ये दोनों को मर्ज करके सिंगल स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट बी स्टार को एक्सेप्ट करेगा, और ए के बाद बी आया तो एक्सेप्ट करेगा, और ए के बाद ये आया तो मार देंगे, ठीक है। ए के बाद ये आएगा तो वो सारे स्ट्रिंग्स को हम मार देंगे। तो ए के बाद ये बी आया, और जितने भी बीस आया हम एक्सेप्ट करेंगे। ये है मिनिमल डीएफए, ठीक है। ये है मिनिमल डीएफए, ठीक है। ओके, आज का आज का क्लास इधर एंड कर देंगे, ठीक है। और कल रिमेनिंग प्रॉब्लम्स कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जय हिंद।